Victor Tango Mike Echo Tango, Mumbai ground. How do you read? Mumbai ground, Victor Tango Mike Echo Tango. Read you 5. How do you read? Victor Tango Mike Echo Tango, Mumbai ground. Read you 2. I say again, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Mumbai ground, Victor Tango Mike Echo Tango. Read you 5. How do you read? Victor Tango Mike Echo Tango, Mumbai ground. Read you 5. Okay, Meet. So I'm sharing your paper on screen and let's get started. Okay, sir. Do I have to keep my video on? Your choice. Okay, Focus on the performance. That's it. all right. I'll keep it off then, if Sure. you don't mind. Sure. You can start transmitting. Meet the time is 1130. Okay. Okay, sir. Yeah.
Question number 1, Alpha. Delhi ground, Air India 4159er. Stand 2, information Bravo. IFR Delhi to Bhopal, then VFR Bhopal to Nagpur, passengers on board 90, security check cleared, request startup. Air India 4159er, Delhi ground, startup not approved. Startup not approved, request reason Air India 4159er. Air India 4159er, startup not approved due step ladder still attached. Delhi ground. Startup not approved due step ladder still attached, request ground assistance to detach step ladder Air India 4159er. Go to next question. Question number 1, Bravo. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan. Air India 4159er. Holding short, runway 25. See an aircraft on base leg, runway 25, switching on off landing lights, holding position, request further instructions.
Go to next question. Question number 2, Alpha. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, Delhi Tower, Air India 4159er, on takeoff leg, runway 25, flaps stuck, would like to return to Delhi. Request sector flying to burn fuel, radial 193 to radial 240. Request sector. Go to next question. Question number 2, Bravo. Delhi Tower, Air India 4159er, 30 DME inbound Delhi, flaps working normally, radial 240, would like to continue, correction, would like to initiate missed approach and
continue to Bhopal, IFR, estimating, Delhi, 1155, Akela, 1210, Intel, 1230, Kalna, 1245, Ibani, 1300, Bhopal, 1320, Radial, 342. Request clearance. Go to next question. Question number 3. Delhi radio, copy. Mumbai radio, Air India 4159er, FIR report over Ibani, 70 DME inbound Bhopal, radial 342, flight level 310, route Whiskey 20 South, estimating Bhopal, 1320, Delta 1330, ETA Nagpur 1345, radial 308, route Whiskey 38. Request crossing clearance. Go to next question.
Question number 4. Mayday, mayday, Which mayday. question number? I say again. Question number 4. Alpha. Mayday, mayday, mayday. Nagpur Tower. Air India 4159er. On base leg, runway 09er. See another aircraft head on, turning right 15 degrees to avoid collision. Passengers on board 90. You don't know how to speak numbers in RT? Correction. Passengers on board 90. Go to next question. Come on, fast. Question number 4, Bravo. Nagpur Tower, Air India 4159er. Long finals, runway 09er. See another aircraft back tracking runway 09er, initiating missed approach and go around procedures. Go to next question. Quick. Nagpur ground. Correction. Question number 5. Nagpur ground. Air Check the India. ATC. Roger. Question number 5. Nagpur Tower, Air India 4159er. Landed runway 09er. Received
information about loud noise from under the cabin. Request fire fighting assistance and Okay, further. time's up. Roger. Submit your logs and wait for results. Okay, Okay, sir. take your time. Yes, sir. Okay, Meet. So, how was the experience? Yes, sir. Just give me a second. I'll send you the, Use RT, no? Say standby or something. sorry, sir. Stand by. I'll just send you the logs. Sure, sure. Take your time. Nothing to be sorry about here. It's fine. Yes, sir. Shared it on WhatsApp. Sure. Okay, quickly. How was the flight plan? How was the experience? So the flight plan was like the question paper in general was, according to me, it was a bit tough compared to the last ones. And yeah, the flight plan was Delhi to Nagpur, Air India 4159er. Flight rules were Yankee, so which is IFR first, then VFR. And the aircraft registration was given. I'm not sure why, but it was given. Mm-hmm. Uh,
Yeah. Did you take a screenshot of Yes, I the question paper? You have it for reference, right? yes, I do. Okay. What else? Mistakes, self-analysis, time, mistakes in the way you are talking or anything. Share your views as if you're discussing the paper before your results are out. Hmm. Yeah. Yeah, I did make a few mistakes. I feel it was in question number two, Bravo. Mm-hmm. Uh, yeah, the initiating missed approach. Because it was because I got a bit stuck. I didn't know what to do. That's why I just said whatever I could think of. Question number two, Bravo. Read out the question. Just a second. Yeah, it was flaps are working normally. Hmm. Yeah, that. Other than that, um, So what yeah, was the mistake there? You're saying that, okay, there's some confusion there. yeah, I said flaps working normally, would like to initiate missed approach and continue to Bhopal. I'm Mm-hmm. not sure if that's correct. Mm-hmm. So I just wanted to know what to say in that one. Mm-hmm. What else? Yeah. What else? Other than that, question number four, I was a bit confused on what is DH. Hmm. Quickly check your abbreviation stock, decode. Yeah, just a second. Let's time this. Have you read the abbreviations doc? Yes, sir, I have. I've gone through it once. How about ILS summary? ILS summary. Uh, ILS has categories. Cat mhm, 1, Cat 2, Cat 3, AVC. That's mhm, where you have repeated mention of DH. If you don't know DH, then examiners can question your logical aspects of learning because it's a part of ILS. So DH is something that is like A is alpha, B is bravo, that kind of an abbreviation. okay. Hmm. Fine, I'm timing you. Quickly find it out. Yeah. It shows decision height in the iCAD doc 8400. Yeah, it's the height on your arrival when you make a final decision whether to land or not. Okay. Yeah, so based upon the best category of ILS, Cat 3, A, B, C, C will give you like worst visibility possible. You can still make a call to land. That's how Mm, it is identified. okay. So that's the whole table. Quickly check your summary page, read it out. Uh, the summary page of RN Systems, ILS. okay. Check the drive. If you cannot, if you don't have the access, tell me. Yes, I'm checking it. Yeah. It doesn't take long time. See here on the screen. Hardly takes 5 minutes to access if we have our devices ready. So this is something important that you can remember this table. This table is very important in Mm-hmm. a way to know what are the different types of ILS system categories. Not all aircraft will have the same category. Mm-hmm. So an aircraft with ILS category 3C will have a decision height of 0 feet. It's like and 0 meter. So it's like Mm-hmm. compare it to Cat 1. Cat 1, your decision height will be more than or equal to 200 feet. So at 200 feet, you have to make a call whether you land or not, even with an ILS. That's the whole point. And your RVR should be more or equal to 550 meters. So Mm-hmm. even with Cat 1 ILS, you need certain RVR, basically. Although you're using instruments, you need certain visibility. If you Okay. have Cat 1 aircraft and your Cat 1 ILS system on the aircraft or Category 1 aircraft is how we can call it, Mm-hmm. then if your RVR is below 5,000, correction, if your RVR is below 550 meters, that's 550 meters, then you cannot.
Land. You have to do a missed approach and go around procedure or hold till the weather improves. Okay. So don't miss out on it and try to memorize this table. आराम से पिक्चर मेमोरी क्लिक करके याद करके 2 बार बना लेना, दो Mm, तीन बार याद रखो इसको. कभी कभी कुछ कॉल्स या कुछ क्वेश्चंस में इसका लिंक होता है that RVR is less than certain, let's say 200 meter, and they'll show you that in your other information or somewhere you have CAT 3A with you, or mm, maybe CAT 2 or maybe CAT 3B. So वो कनेक्ट भी कभी कभी आ सकता है कोई एग्जाम या कोई पेपर में. okay. Okay. तो DH एटलीस्ट फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि समरी में है, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. बट Mm-hmm. ठीक है, अभी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. बट यू टैकल द क्वेश्चन रियली वेरी वेल. लॉन्ग फाइनल्स बोला आपने, बट यहाँ देख के आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपने सही बोला है. ठीक है. Okay. 200 फीट, 100 फीट, इट्स हाउ मच लाइक, या फाइनल्स, लॉन्ग फाइनल्स के बीच में कहीं Final. हो आप. Yeah. नो इश्यूज देयर. सो गुड गुड, ओवरऑल गुड जॉब. व्हाट एल्स? Um, yeah. क्या, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप क्विक एक्सेस के लिए. और देखो मैंने कितनी जल्दी एक्सेस निकाला है. आप क्यों नहीं कर पा रहे हो समझ नहीं रहा है. आपको शायद ड्राइव के थ्रू जाएगा, या कैसे आप एक्सेस करते हो मुझे नहीं पता है, बट इट्स वेरी इजी. ये पूरा Yeah. फोल्डर शेयर किया है ना, ये फोल्डर का Mm-hmm. क्विक एक्सेस स्टार करके रखो आप. Mm-hmm. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों. कितना ही टाइम जाता है. इट्स वेरी इजी. ड्राइव पे देने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर सको. Uh-huh. Right. Yeah, I've saved it on my drive and I've also downloaded that. So, या सो ये क्विक एक्सेस से आपकी एक्स्ट्रा रिवीजन, पढ़ाई एंड फिल इन द ग्लैम्स फिल इन द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स और ब्लैंक चलते चलते होते रहेंगे. लाइक यू डोंट नो mm, व्हाट इज डीएच, क्विकली रिफर एंड यू विल बी लाइक ओके दिस इज डीएच. ओके, mm, थोड़ा डीएच नहीं पता तो थोड़ा रीड कर लेता हूँ. पहले तो हिंट क्या है मेरे डीएच का, अच्छा तो सर ने दे दिया, तो मैं मेरा पहले समरी पेज नोट्स चेक करता हूँ. mm-hmm. इतना लाइक, सो दिस इज समथिंग वेयर दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर फाइनल डेज नाउ. कुछ ना कुछ मिलेगा ही एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको. Yes. व्हाट एल्स? हाउ Uh, इज एक्सपीरियंस अदरवाइज? व्हाट एल्स? Other than that, you had mentioned last time that there's not much energy in my calls. So I took that feedback and tried improving it. I don't know how it was today. It was perfect. Your first readability check that we did when we just established contact, that Mm-hmm. was the same. But I asked you to, we did it again. And I think that's where it triggered that you realized and then you were good. Loved the speed and everything, and you were able to finish the lengthy paper. Although you started a little late, again, you took at least 4 to 5 minutes. Why did you take more than 4 minutes to start the paper? Did I distract you with that time, 1100 or something? No, sir. Actually, I forgot to keep my sheets of paper with me. I ran and got it, and so that I could start writing. You could have told me, na? I could have buffered, given you a buffer of a minute or so. No problem. Anytime when you're facing a technical issue with any examiner or anything, you can always tell them, sir, एक second, sir, can you just hold, sir? There's a problem. Can we fix this and then do the exam? Otherwise, if you Mm. have a problem, you don't tell them to fix, they will not know. And once they start the timer and when it's gone, then they might not come back. So Okay. here you could have said, sir, 1 second, 1 second. I need 30 seconds. Like I forgot my sheets. I'm like, yeah, sure. So I'll give you that 30 seconds there. Okay, Mm. good. So yeah, unplanned things will happen. There was marking on the charts on purpose because these days some students are getting charts with a lot of marking because they are not laminating the sheets. So Mm. maybe certain students are just insensitive to not mark Mm. anyway. So yeah, energy was good. Keep it up. But there was a trigger initially. If we don't get trigger, will you not work on the energy? Is what I'm thinking. So Mm. always remember, मैं आ गया हूँ एग्जाम सेंटर में. एनर्जी लानी लानी है. एनर्जी देन आई कैन रिजर्व व्हेन आई एम गोइंग बैक फ्रॉम द एग्जाम सेंटर. But it was good. You did work on it. I'm very happy. I can see a lot of improvements. Excellent. 9 को 9 बोला एक दो बार. एंड पैन पैन में W1 मिस कर दिया आपने एक कॉल में. उस कॉल में थोड़ा पोजिशनल अवेयरनेस नहीं था. सेक्टर फ्लाइंग के 2 एलिमेंट्स मिसिंग थे. कैंसिल पैन पैन में कैंसिल पैन पैन नहीं बोला है. बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट, इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट यूज इट. एंड उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा मिस्टेक्स थी नहीं. एक दो जगह पे करेक्शन नहीं बोला है. एंड दिल्ली रेडियो में अपने चेंजिंग ओवर टू मुंबई रेडियो बोलना था, नॉट क्रॉसिंग क्लियरेंस. क्रॉसिंग क्लियरेंस हम VHF पे Mm. पोजीशन रिपोर्ट पे ले सकते हैं, कंट्रोल बाउंड्री क्रॉसिंग कर रहे हैं तब. Okay. और बट ठीक है. चेंजिंग ओवर बोलना है. मे डे का स्ट्रक्चर ठीक था. कुछ क्लियर इंटेंट समझ नहीं आ रहे थे. टाइम का प्रेशर है वो थोड़ा फील हो रहा था.
तो वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिफाइन हो सकता था। यहाँ आपने डीएच नहीं पता, ठीक है, लॉन्ग फाइनल्स बोला, नॉट बैड, बेनिफिट और डाउट मिलेगा आपको। गुड थिंकिंग रनवे जीरो नाइनर, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन पे रनवे जीरो नाइनर था, वेरी गुड। एंड क्वेश्चन नंबर 5 वाज ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन, आपने पैन पैन नहीं बोला वहां पे, तो वो क्लिक नहीं हुआ शायद। गुड दैट यू पुश्ड योर सेल्फ टू एटलीस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन, कम से कम 6 से 8 मार्क्स तो मिलने ही हैं आपको, तो 20 में से 0 मिलने से अच्छा 6 से 8 10 तो मिल जाए। गिविंग यू हम्म बेनिफिट ऑफ द डाउट, आई थिंक आप पूरा कर पाते ये कॉल, बिकॉज अगर अगर आपको 30 सेकेंड 1 सेकेंड 1 मिनट नहीं वेस्ट होता। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 4, लाउड नॉइस, किस चीज की लाउड नॉइस है? टायर बर्स्ट हो चुका है मेरा, टायर बर्स्ट क्यों हुआ है ऑन लैंडिंग? इट इज बिकॉज ब्रेक्स वेर हॉट। ये इंडिकेशन है जो हम शुरुआत में सीखते हैं पैन पैन में, वन ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल्स दैट वी सॉल्व। यहाँ पे कॉल आएगा, पहले तो पैन पैन, आप समझ लो कॉल और क्विकली शॉर्टकट में लिख लो स्क्रिप्ट। पैन 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 पैन, नागपुर टावर। और आप ग्राउंड को कॉल कर रहे थे, लैंडेड है रनवे, आप क्यों ग्राउंड को कॉल कर रहे हो, टावर को कॉल कर रहे हो? ये तो अच्छा एटीसी ने आपको बोला, बट हम्म लैंडिंग है तो आप ग्राउंड को क्यों कॉल कर रहे हो? नागपुर को क्या स्पेशल कुछ है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो थोड़ा सा और फोकस। मैं देख रहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 ब्रावो में आपकी एनर्जी शायद ऐसे लग रहा था कि हो गया, आप गिव अप कर चुके हो, ऐसा कुछ था क्या? हाँ, नो नो सर, आई वाज बिकॉज जस्ट आई हैड अ टाइमर, यू डिडंट हैव टाइमर, सो आई कुड सी दैट क्वेश्चन नंबर 4 ब्रावो पे आप बहुत स्लो हो गए, या एंड उसी देर आई आप वाज बहुत फास्ट जा रहे थे। yeah, I was a bit confused regarding the DH only, so I was not sure if I was giving the right call. That's why maybe you could have felt that way. रिमेंबर यू हैव टू स्टैंड बाय योर सेल्फ, सिंपल। सो एक कंफ्यूजन हो गया, इट शुड नॉट मेक यू मेक योर परफॉर्मेंस थोड़ा कम नहीं करना चाहिए वो। Mm-hmm. एक कंफ्यूजन ही तो है, क्या हो गया, यू फिगर इट आउट ना। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट। You cannot doubt your intent when you're trying to figure out something on your own. You cannot doubt your intent. You have to stand by your intent. If you're doubting your intent and that is further reducing your performance, then that is not the right way to go about it. You stand by what you're doing till the time you are giving the paper. Simple. है ना? Remember this. एक चीज Yeah. नहीं कंफ्यूज आ गई तो डोंट पनिश योर सेल्फ देयर, नो। यू एक नहीं आई तो क्या हो गया, अरे आई हैव टू क्लियर, आई हैव टू सपोर्ट माई सेल्फ, नहीं आया तो क्या हो गया, सर कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएच? पूछ लो आपका क्या जा रहा है, तो ना वो मार्क्स काटने वाले हैं आपके। यू शुड बी लाइक दिस, समझ रहे हो? Okay. इंस्टेड ऑफ जजिंग योर सेल्फ इन अ बैड वे, मेरे को नहीं आ रहा हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो, नहीं। एक चीज भूल गया, कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, अभी मेरे को परफॉर्म करना है। व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? लॉन्ग फाइनल्स, आई गिव यू क्रेडिट, नॉट बैड एट ऑल। फाइनल्स Mm-hmm. लॉन्ग फाइनल दोनों चलता, फाइनल्स बेटर होता, नहीं फर्क पड़ता, कोई कैटेगरी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, डीएच का हाइट नहीं दोगे चल जाएगा, बट आपको अभी समझ आ गया है कि 300 फीट, 200 फीट, 100 फीट वाली रेंज है। याद कर लेना आज उसको, शाम को बहुत फायदा होगा आपको, दिस इज गिविंग यू एक्स्ट्रा नाउ। समझ रहे, Mm-hmm. एक्स्ट्रा गियर हो गए आपके। बेयर मिनिमम कर चुके हो आप, धीरे धीरे एक्स्ट्रा करोगे, जो कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। सो यू विल बी कवरिंग दोज क्वेश्चंस विच यू विल बी आस्क्ड बट यू कैन नॉट आंसर, ऐसी बात हो जाएगी। अब यू विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज स्कोर आपका बहुत स्ट्रेंथन हो गया है। Okay. सो ये कॉल कैसा आएगा? पैन 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 पैन, नागपुर टावर, एयर इंडिया 459er, लैंडेड रनवे 09er, लैंडेड रनवे 09er, ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन, suspecting tire burst, loud noise from under cabin heard, stopping the aircraft slowly, request further instructions, and firefighting services on runway 09er, Airbus 320, passenger on board, so and so and so. लैंडेड एट नागपुर सो एंड सो टाइम, बिकॉज इसमें थोड़ा अराइवल रिपोर्ट का भी एक एलिमेंट आना चाहिए, बिकॉज यू जस्ट लैंडेड, यू जस्ट गिविंग योर अराइवल रिपोर्ट। तो यहाँ Mm-hmm. अराइवल रिपोर्ट नहीं भी बोलोगे चलेगा, बट थोड़ा टाइम भी बताना है आपको। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कॉल, इट्स अ वेरी सिंपल कॉल। यू कैन रिफ्रेम सर्टेन वर्ड्स इन योर ओन वे इफ यू वांट। Mm-hmm. समझा? बताओ मुझे कॉल क्या होगा, जस्ट बोलो, यू डोंट हैव टू राइट इट, क्विक। Yeah. Pan 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 Nagpur Tower Air India 4159er. Landed runway 09er. Brakes hot indication. Uh, Request firefighting services runway 09er. Passengers on board 9er 0. Heard loud noise from under the cabin. Request firefighting assistance and further instructions. ठीक है, नॉट बैड। फायर फाइटिंग असिस्टेंस नहीं है, फायर फाइटिंग सर्विसेज। Firefighting एंड services.
सस्पेक्टिंग टायर बर्स्ट आप बोल सकते हो कि ब्रेक शॉट इंडिकेशन कॉकपिट में आ रहा है। लाउड नॉइस का क्या ओके। है ना, वो भी मेंशन करना है जैसा आपने इसमें किया है। ओके, इट्स नॉट फायर फाइटिंग असिस्टेंस, हम्म। इट्स फायर फाइटिंग सर्विसेज। देखो इसका एक एब्रिवेशन दिया है आपके एब्रिवेशन बुकलेट में, वही वर्ड आपको यूज करना है। ओके। वो यूनिवर्सल है। हम्म। ओके। ये जो आपने अभी बोला उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रिपीटेटिव था, उसी को दिमाग में स्ट्रक्चर करना है। पैन पैन कम ऑन, ब्रेक शॉट टायर बर्स्ट is a risky business. It can catch fire anytime. There's nitrogen in it. Engines are warm and they're just shut down. They're not even shut down. You've just landed. हम्म। Brakes hot indication and loud noise. Loud noise means the worst has happened. Brakes hot is not the worst. Brakes हम्म। hot के बाद अब तक टायर बर्स्ट नहीं हुआ. You have to stop the aircraft and naturally allow the tires and the wheels to cool down before you can move the aircraft. हम्म। यहाँ पे शायद टायर बर्स्ट हो चुका है, so you'll need a tow truck, and before tow truck you might have to have instructions to evacuate the passengers also, but not now. Once the temperatures have fallen down, because एक टायर बर्स्ट हुआ है तो सीरीज में सारे भी बर्स्ट हो सकते हैं. It's a ओके। deadly situation. So, but still it's pan pan. It's not that threatening to us, but it can always escalate. तो सिचुएशन इतनी डेंस है उसके हिसाब से तो हमें कॉल लेना है ना. ये कॉल आप मुझे सेशन होने के बाद एक अच्छे से सोच समझ के बना के भेजना, ओके। एंड खुद को टाइम कर लेना, 2 मिनट, 2.5 मिनट. ओके। क्वेश्चन नंबर ब्रावो, लॉन्ग फाइनल्स ठीक है, बैक ट्रैकिंग, इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर्स ठीक है, नॉट बैड. जो क्वेश्चन में है वो बोलना है, थोड़ा एब्रिवेशंस अच्छे से रीड कर लेना, डिकोड वाला कर लेना काफ़ी होगा, रेडियो टेलीफोनी वाला जो सेगमेंट है उसमें वो कर लेना, वो भी काफ़ी होगा. ओके। नॉट बैड. अभी डिसीजन हाइट के बारे में हम समझ ही चुके हैं. यहाँ पे you'll get 7 एटलीस्ट. ऐसे मार्क्स तो इतना कुछ इश्यू नहीं है, आई थिंक you'll क्लियर दिस वन इजीली. बहुत अच्छा था. एंड टाइम नहीं थी, नहीं तो आपको थोड़ा और रैली करते, बट इनिशियल रैली वाज फाइन, नॉट अ इश्यू. मेडे के स्ट्रक्चर में बस मुझे थोड़ा रिफाइन आप करोगे तो अच्छा लगेगा. लाइक मेडे 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 नागपुर टावर एंड 459er, बेस लेग रनवे 09er, वेरी गुड. सी अनदर एयरक्राफ्ट हेड ऑन. पहले बोल दो सी अनदर एयरक्राफ्ट हेड ऑन बेस लेग रनवे 09er, बट ये भी चलेगा. टर्निंग राइट 15 डिग्रीज नहीं होता है, ये कोई डिग्री नहीं है इसमें, जस्ट टर्न राइट एज यू कैन. ओके। दैट्स इट. टर्निंग राइट और टर्निंग लेफ्ट 15 डिग्रीज, वो टर्निंग लेफ्ट 15 डिग्रीज हमारे टेक ऑफ पाथ के लिए है. टेक ऑफ पाथ पे कुछ हो गया तो ओके। देखो मैं आपको इसमें क्विकली समझाता हूँ कैसा है ये आपका रनवे है, एंड 09er, राइट. तो दिस इज 09er रनवे, इफ दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ. तो सपोज ये आपका ट्रैफिक पैटर्न है लेफ्ट हैंड सर्किट, तो ये आपका बेस लेग हो गया. ओके. या। यहाँ पे आपकी एयरक्राफ्ट यहाँ से आ रही है और गलती से आपने देख लिया कि एयरक्राफ्ट यहाँ से आ रही है, मतलब आपने देख लिया कि गलती से कोई एयरक्राफ्ट यहाँ से आ रही है, सो मे बी सम अदर एयरक्राफ्ट हैज मिसजज्ड देयर clearance to join the ATC circuit, or they have done something wrong, but they are coming from here. This is your traffic. This is you. सो हेड ऑन जब भी होता है ये यहाँ जाएगा, आप यहाँ जाओगे, दोनों का राइट हो जाता है, बस एक्सट्रीम राइट. तो ओके। आप राइट जाओगे, यहाँ पे आप राइट तो जा रहे हो, बट फाइनल्स एंड लॉन्ग फाइनल्स वाली एयरक्राफ्ट्स को आप थ्रेट देने वाले हो यहाँ पे. इट्स अ रिस्की सिचुएशन. आपका ऑल्टीट्यूड और उनका क्या ऑल्टीट्यूड है वो मैटर करेगा यहाँ पे. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. यस। वी हैव टू बी कॉशियस कि मैं कहाँ हूँ और क्या करने वाला हूँ. तो यहाँ पे आप टर्निंग राइट टू अवॉइड कोलिजन विद ट्रैफिक, पैसेंजर ऑन बोर्ड एंड ऑल इज फाइन. स्ट्रक्चर क्या है मेरे का, एड्रेसिंग, कंडीशन, इंटेंट एंड एडिशनल इन्फो. मेडे 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 नागपुर टावर एंड 4159er, करेक्ट. कंडीशन, सी अनदर एयरक्राफ्ट ऑन बेस लेग, सी अनदर एयरक्राफ्ट हेड ऑन बेस लेग, करेक्ट. इंटेंट, टर्निंग राइट, ओनली राइट, डोंट से 15 डिग्रीज हियर. कहाँ से आया 15 डिग्रीज, नहीं, जस्ट टर्न राइट, बोथ एयरक्राफ्ट शुड गो ऑन द राइट, डोंट से 15 डिग्रीज. Turning right to avoid collision. Request climb to 3500 and instructions.
टू रिजॉइन एडीसी सर्किट, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा आपको बोलना है तो। या फिर ओके। वहां पे आपको राइट में भेज के कुछ तो होगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल, सीधा राइट लेके ऐसा ना हो कि मैं उन एयरक्राफ्ट को समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यस यस, आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हम्म। सो 15 डिग्रीज के अलावा सब सही था, इट वॉज अ गुड कॉल। ओके। वेरी नाइस, कुछ गलत नहीं किया है आपने, फील हुआ कि स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया, बिकॉज कुछ मिसिंग लग रहा था, बट आंसर देने के टाइम नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 7, उससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा। तो ओके। विल स्टिक ऑन 8 ऑन दिस। एंड क्रॉसिंग क्लियरेंस नहीं है, इधर ये बस यही बोलोगे, चेंजिंग ओवर टू मुंबई रेडियो। मुंबई रेडियो, दैट्स इट। डिड यू गो थ्रू द कॉल साइंस फॉर रेडियोस, एफआईआर, लोकेशन इंडिकेटर्स? यस मुझे यस। टेक्स्ट पे भेजना व्हाट्सएप पे चारों के, ओके। ताकि कभी कुछ किसी को भेजना हो तुम्हारा मैसेज कॉपी पेस्ट कर सकूँ मैं। चल श्योर। ऑलवेज लुक मीट के चैट में सर्च करूंगा मैं, समझ गए? तो या। वहां मेरे को क्रॉस वेरीफाई करके लोकेशन इंडिकेटर से भेज देना बस, चारों का फुल फॉर्म एंड लोकेशन इंडिकेटर। ये अच्छा था। एफआईआर रिपोर्ट ओवर इबानी, गुड थिंकिंग। यहाँ एस्टिमेटिंग करेक्शन नहीं बोला यहाँ पे बस, और तो कोई इश्यू नहीं था, डेड एयर था बट नॉट अ बिग डेड एयर। ठीक ओके। था ये कॉल, अच्छा था। डीएमई, रेडियल फ्लाइट लेवल रूट एस्टिमेट्स, कॉल साइंस व करेक्ट, रिपोर्ट का नाम करेक्ट था, बस रिपोर्ट के नाम के बाद अपना कॉल साइन नहीं आया, एक और बार बोलना है यहाँ पे। एनी रिपोर्ट यू गिव यू स्टार्ट विथ योर कॉल साइन, एंड द अर्लियर कॉल साइन इज एन आरटी कॉल साइन, ओके। बस। अच्छा था ये, इजीली 16 या फिर 17 मिल जाएगा यहाँ पे। वेरी हैप्पी टू सी के इम्प्रूव बहुत, पहले भी अच्छे ही थे, अब तो और अच्छे हो गए, सो दैट्स अ गुड थिंग। आई थॉट विल कीप दिस एज ए फाइनल मार्क, बट मे बी आई कैन गिव यू वन मोर, व्हाई नॉट, है ना? Sure, sure. Yeah, it'll be व्हाई better नॉट, for me. Yeah. लाइक फुर्सत है तो कर सकते हैं, फुर्सत नहीं होती तो शायद अभी भी यू वुड हैव बीन गुड टू गो। Hmm. कर लेंगे अपन एक और, तब Sure, sir. सबको बुला लेंगे, है ना, क्लास में। काफी Okay. बच्चे वेट कर रहे हैं वैसे। आज तो मैं चाहता था कि वन ऑन वन हो, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं है, बट Hmm. नेक्स्ट वन वी कैन सी। तो पब्लिक प्रेशर में और टफ पेपर देता है आपको, देखते हैं कैसा होता है ना, उस Hmm. दिन वीडियो भी ऑन रखते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा। सो आई थिंक थर्सडे फ्राइडे का प्लान कर लो आप, Okay. Yeah, है sure. ना? कैंसिल पैन पैन नहीं बोला, दो तरीके हैं। आप पहले तो बोल सकते हो पैन पैन, दिल्ली टावर, एयर इंडिया 459er, कैंसिल पैन पैन, और बाद में ये Hmm. पूरा कॉल दे सकते हो जो भी आपने बनाया है। कॉल थोड़ा अननेसेसरी लग रहा था। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे क्या करना है, तो उस कॉल पे थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के उसको रिफाइन कर लो और फिर दे दो कॉल। Okay. सो आपने फर्स्ट वाले में क्या किया था ना, फर्स्ट वाले में सेक्टर फ्लाइंग में टू एग्जॉस्ट फ्यूल बोलना है, बर्न नहीं बोलना है, टू एग्जॉस्ट फ्यूल। एंड आपने ये यहाँ पे क्या बोला था वो मैं सुन नहीं पाया था अच्छे से। यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया है कि एयरक्राफ्ट ओवरवेट फॉर लैंडिंग, फ्लैप स्टक, एयरक्राफ्ट। तो ये एक कॉल है जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे हो, दूसरी तीसरी बार आ रहा है आपके पास, तो भी मेरे को उतना परफेक्ट नहीं मिल रहा है, बट बेटर मिला है। एयरक्राफ्ट ओवरवेट वुड लाइक टू रिटर्न टू दिल्ली, एयरक्राफ्ट ओवरवेट फॉर लैंडिंग, ऐसा हो गया। Okay. रिक्वेस्ट सेक्टर फ्लाइंग टू एग्जॉस्ट फ्यूल, रेडियल 1903 टू रेडियल 240, फ्लाइट लेवल बोल दो 705060, ड्यूरेशन मे बी 20 मिनट्स, पोजीशन प्रेजेंट पोजीशन क्या है तुम्हारी? तो इमेजिन करो ना, मैंने बस एयरबोर्न हुआ हूँ, एंड क्या ही होगा, पासिंग मे बी अ फ्यू थाउजेंड फीट फॉर सर्टन फ्लाइट लेवल वाली सिचुएशन होती है। Mm-hmm. क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है बताओ, टू अल्फा। Airborne, you expect, sorry. एयरबोर्न, सो व्हेन Yeah. यू आर एयरबोर्न इट्स जस्ट लाइक वी आर होके आप जस्ट इनिशियल जा रहे हो, और ये जो फ्लैप एक्सटेंड एंड रिट्रैक्ट होता है ना, इसकी एक स्पीड होती है, एंड दिस इज वेर योर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो Hmm. इसकी एक स्क्रीन हाइट वगैरह होते हैं, आप नेविगेशन में पढ़ोगे ये, परफॉर्मेंस में पढ़ोगे ये। तो ये आपका रनवे है, तो आप यहाँ से ऐसे टेक ऑफ करते हो, यहाँ पे एक आपकी स्क्रीन हाइट होती है, इनविजिबल स्क्रीन, जिसके अंदर अंदर से आपको टेक ऑफ करना है, बाहर नहीं जा सकते हो, नहीं तो यूल हैव कोलिजन्स विद
अदर थिंग्स। फिर यहाँ से है ना आपकी ऐसी स्पीड जैसे बनती है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऊपर जाते हो आप। तो यहाँ हम्म। से एक फ्लैप्स की स्पीड और एक रेंज आती है। तो यू आर वेरी क्लोज। आप ज्यादा ऊपर हो ही नहीं, 1500 बोल दो, 1000 फीट बोल दो। एयरबोर्न इज दिस, समझ रहे हो? या। सो you can say air departed so and so runway at so and so, passing 1500 for flight level 50, flaps are stuck, aircraft unable to climb, would like हम्म। to land back at Delhi, aircraft overweight for landing, request sector to exhaust fuel, radial so and so, duration so and so। और आप 50 जा ही रहे थे, अभी 150 तो आप बोल सकते हो फ्लाइट लेवल 40 या फ्लाइट लेवल 50। ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड के ऊपर ही जाओगे, नीचे मत रहना, लेकिन आप उतना ध्यान रखना। सो ओके। वो चीजें मिसिंग थी सेक्टर फ्लाइंग में। अगर आप वो पोजीशन दे देते तो क्वेश्चन नंबर 2 ब्रावो पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती, बिकॉज आपको पता होता आप कहाँ थे। शायद आपको सेक्टर दिया नहीं दिया, आपको पता था आप कहाँ थे, 15 DME, 10 DME आउटबाउंड, हम्म। इतना बोल सकते थे। और डायरेक्शन आपका रनवे हेडिंग होगा जनरली इफ यू आर एयरबोर्न। ठीक है, तो वहाँ रेडियल नहीं बोलोगे चलेगा, बट रनवे हेडिंग बोल सकते हो आप वहाँ पे। ओके। ओके। तो वो सेक्टर फ्लाइंग में थोड़ा क्लैरिटी नहीं था, इसलिए शायद वहाँ कंफ्यूजन हुआ। एयरक्राफ्ट हम्म। ओवरवेट लैंडिंग मिस किया, एग्जॉस्ट बर्न ठीक है, बेनिफिट आउट मिल जाएगा, बट फ्लाइट लेवल, ड्यूरेशन एंड खुद का पोजीशन क्या है, कहाँ हो आप। So in my call, I've mentioned it, if you can see. I've mentioned takeoff leg runway 25. या, दैट इज गुड, दैट्स व्हाट आई वाज मिसिंग। टेक ऑफ लेग रनवे टू 5, वेरी गुड। सो यू नो दिस, जस्ट मेंशन योर फ्लाइट लेवल और ऑल्टीट्यूड पोजीशन में। Okay. पोजीशन में ये बता दिया आपने, डायरेक्शन, डीएमए बता दो, या फिर या डीएमए बता दो एंड ऑल्टीट्यूड, पासिंग दिस फॉर दैट, दो चीजें मिसिंग थी बस। हम्म। गुड। टेक ऑफ लाइक रनवे 27, यस। तो यहाँ पे कैंसिल पैन पैन, कैंसिल पैन पैन आप बोल सकते हो पैन पैन, W1 W2 कैंसिल पैन पैन, दैट्स इट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलेंगे शुरू में पैन पैन नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, उनको बोलने दो। आप ऐसे भी ले सकते हो, दिल्ली टावर एयर इंडिया 459er, करेक्शन, दिल्ली टावर एयर इंडिया 4159er कैंसिल पैन पैन, ये भी चल जाएगा। बट एक बार पैन पैन बोल के अटेंशन आ जाएगा उनका, एंड फिर कैंसिल पैन पैन बोल सकते हो। इमरजेंसी में 3 बार पैन पैन बोलना बहुत ज़रूरी है, आइडली 3 टाइम्स। Okay. तो ये बहुत ज़रूरी था, ये आपने यहाँ पे मिस किया है। 30 DME इनबाउंड दिल्ली, फ्लैप्स वर्किंग नॉर्मली, रेडियल। सो ये फ्लाइट लेवल ड्यूरेशन पोजीशन में आप एक डीएमई भी दे सकते हो, डीएमई सो एंड सो और लेस और मोर, वो डीजी वो एटीसी खुद आपको बोलेगा जनरली कि इतना, इससे ज़्यादा दूर मत जाना आप, पास में ही हम्म। रहो। तो वो आपको एक डीएमई रेफरेंस देगा, क्या वो डीएमई रेफरेंस को ही मेंटेन करते रहो और अपने टर्न्स लेते रहो सेक्टर में। हम्म। तो ठीक है, आपने उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छे से गैस किया। 30 DME इनबाउंड दिल्ली, फ्लैप्स वर्किंग नॉर्मली। ये आपने क्या था, रेडियल 240। ठीक है, आप रेडियल मांगे थे, आप 240 आप उसी पे हो, वेरी नाइस। फ्लाइट लेवल मिसिंग था, देखो वही बस। लास्ट टाइम पोजीशन अवेयरनेस बहुत कम था, अब पोजीशन अवेयरनेस है कुछ जगहों पर, परफेक्ट नहीं है जहां आप सरप्राइज हो रहे हो। Yeah. तो you have to just increase your focus and stick to your preparation irrespective of any and all surprises। हम्म। है ना, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक टू कंटिन्यू, करेक्शन, इनिशिएट मिस अप्रोच एंड कंटिन्यू। अगर मिस अप्रोच बोल रहे हो तो बोलो आप फाइनल्स पे हो, फाइनल्स पे नहीं हो, आप 30 DME इनबाउंड हो, तो मिस्ड अप्रोच तो नहीं आएगा यहाँ पे। सिंपली बोलोगे, तुम सोच रहे थे मैं कैसे बोलूँ कि मैं दिल्ली नहीं आ रहा वापस, तो तुम बोलोगे वुड लाइक टू कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन नागपुर, रिक्वेस्ट क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंट मांग सकते हो, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू सेट कोर्स, ऐसा भी बोल सकते हो दोबारा से। बट ज्यादा टाइम नहीं गया, आपके पास फ्लाइट प्लान है, अप्रूव्ड है, आपको क्लियरेंस मिले, बोलो वुड रिज्यूम नॉर्मल नेविगेशन, ये वर्ड भी आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ से यहाँ हूँ, मुझे बस वहां से वहां जाने का क्लियरेंस दे दो, वहां से वहां मैं ऐसे ऐसे चला जाऊंगा, रिक्वेस्ट ज्वाइनिंग क्लियरेंस और क्लाइंब, वैसा कुछ हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपने वैसा ही किया है यहाँ पे। मिस्ड अप्रोच है 30 DME, देखो एक गैप है पोजिशनल अवेयरनेस का आपका, हम्म। कैसे पॉसिबल है? किधर 30 DME, लाइक 60 किलोमीटर दूर हो, आप दूसरे सिटी में हो ऑलमोस्ट, तो मिस्ड Yeah. अप्रोच नहीं होगा। तो नहीं, दूसरे सिटी में, मुंबई के लिए हो सकता है कभी कभी, यू नेवर नो। कंटिन्यू टू भोपाल, IFR। यहाँ तो कंफ्यूज हो गए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एस्टिमेटिंग दिल्ली
ये दिल्ली क्यों एस्टिमेट कर रहे हो आप? बट ठीक है, समझ रहे हैं कि आप दिल्ली से कहीं बाहर हो, तो ठीक है। अकेला, एंटिल, कलना, इबानी, भोपाल। और ये क्या था यहाँ पे, रूट था क्या आपका ये? Just a वाज इट second. रूट और रेडियल? It's रेडियल 342। radius 342 for Bhopal. अच्छा अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है यहाँ बोलना अभी भोपाल का रेडियल। कंफ्यूज हो गया आप दो रेडियल पे एक साथ कैसे हो? ठीक है। Mm-hmm. रिक्वेस्ट क्लियरेंस, क्लियरेंस फॉर व्हाट? रिक्वेस्ट क्लियरेंस और रिक्वेस्ट क्लियरेंस टू सेट कोर्स, ऐसा बोल सकते हो आप। बट ठीक है, नॉट बैड एट ऑल। बस मिस अप्रोच सेंसिबल नहीं लगा, बाकी इट वाज अ गुड एफर्ट। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पैन पैन एंड कैंसिल पैन पैन नहीं किया। जनरली पैन पैन कॉल्स विल बी कमिंग विद कैंसिल पैन पैन। Mm-hmm. I don't expect anything other than your good performance and you standing by your performance. उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना एग्जाम से। यू शुड बी सरप्राइज्ड। सोचो ना कितने बच्चे हैं जो, मतलब इन योर पोजीशन ओनली, पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट है, पास होंगे नहीं होंगे, आज ज्वाइनिंग हो रही है, कल प्लेन फ्लाई करेंगे। लाइक आई एम सीइंग पीपल इन अ स्पैन ऑफ 2 3 4 years ऑल्सो। Mm-hmm. तो बहुत अच्छी बात है यार। सो यू फील दैट प्राइड एंड जॉय, यू आर गेटिंग देयर, यू आर गेटिंग देयर टू फ्लाई अ बिग मशीन यार। कम ऑन, इट्स अ बिग डील। अब Yes. मैं जब सोचूंगा, अच्छा अच्छा, मीत 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 अभी उड़ा रहा है यही और एयरलाइन के लिए, मेरे को खुद को वो थ्रिल आएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग बिग थिंग यार। इट्स अ वेरी बिग थिंग टू फ्लाई अ बिग प्लेन। Yeah, of course. Yeah, get there. Everybody is gonna get there who's going to, study and not give up. Simple. So yeah, always think about that. And RT में तो think about that more. कभी भी कोई कॉकपिट व्यू देखा होगा, इमेजिन योरसेल्फ इन पिक्चर, यहाँ हुआ बोला ये मैं करने वाला हूँ, ये मैं बैठने वाला हूँ। अपने आप कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा आ जाएगा, बिकॉज आप में वो बेसिक्स एंड एलिमेंट्स तो आ गए। धीरे धीरे वो इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट होगा। तो बैक ऑफ द माइंड you'll get good and correct suggestions only. This is what I Mm-hmm. ideally work on every student, and training mein it's embedded. So to just visualize that you are in the PIC seat, because these calls are made with respect to you assuming, or you being put in the PIC seat, Mm-hmm. है ना? सो अच्छा, तो उस हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है। बस वो कैंसिल पैन पैन का थोड़ा सोचो। आपने Yes, yes. ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम है। बट या यू हैव टू बी केयरफुल एंड नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग्स। बट आपने अच्छा किया है। अपार्ट फ्रॉम सेक्टर की चीज़ें, इट वाज अ गुड कॉल। 7, and this was like, you didn't say cancel pan pan, but other than that it was good. Very nice, not bad. 6 मिल जाएगा आपको, क्योंकि कैंसिल पैन पैन नहीं निकला है, तो यू डिजर्व 7 इजीली। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रावो। ये बहुत अच्छा किया आपने, पैन पैन किया, बट इसमें आपने W1 नहीं बोला बस। Yeah, yeah, या सो I दैट वाज अ ग्रेव एरर। तो कोई ATC रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, आपको नो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप वापस से कॉल लोगे तो एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, और उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 शायद अटेम्प्ट भी ना हो आपका। mm-hmm. बट लकीली यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला चलो ठीक है आप करो, बिकॉज यू आर साउंडिंग गुड, दैट वाज गुड। यू हैव गुड क्वालिटी ऑन योर कॉल्स एंड RT, so this is how you get benefit. Simple. The exam is about the language, but we should not exploit it. Mm-hmm. एक बार दिमाग में बना लेते W1 बोलने में, लाइक इट्स अ सिली एरर, इट्स लाइक अ ह्यूमन एरर। आई वोंट से कि आपने मिस्टेक क्यों किया, आई विल बी सेइंग अवॉइड दिस मिस्टेक। Yes, है ना? व्हाई अलाउ योरसेल्फ टू मेक दिस मिस्टेक, लाइक नाइनर वाली मिस्टेक क्यों की, ये वाली क्यों की? ये दो चीजें तो अवॉइडेबल थी इजीली। of course, yeah. Holding short runway 27, see aircraft on base leg, appears to be a traffic in distress बोल सकते हो। बोइंग एयरबस थोड़ा ट्रैफिक को डिस्क्राइब कर सकते हो। Mm-hmm. नहीं किया तो भी ठीक है, कर सकते हो। आपके आपको दिख रहा है एंड यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड द फैक्ट दैट दैट एयरक्राफ्ट इज स्विचिंग ऑन ऑफ लैंडिंग लाइट, इट मींस दे हैव RCF एंड दे हैव इमरजेंसी। Mm-hmm. यही फाइनल्स पे होता तो आपको भी रिस्क होता, बिकॉज यूर होल्डिंग पॉइंट रनवे 27, तो आपके लिए वो कॉल मेडे भी हो सकता था। Okay, okay, okay. So is it a Mayday or a pan call? You are on base, they are on base leg, na? It's pan pan. If they are on finals, then it could be made for you, Okay. Mm. because it's as good as they are on finals and they have RCF and you are here and they are here. बहुत पास से जाने वाले हो वो आपके। But they are on base leg, so still time है। Okay. So when an aircraft in distress
is on base leg, it's pan pan. When it's on mayday, you can make a mayday. When it's on finals, you can make a mayday call. Okay. Determining the threat for yourself, the emergency, the risk for yourself. Mhm. स्टार्टअप कॉल में बस एक मिस्टेक तो करनी थी, तो 9-0 बोल दिया नाइनर की जगह पे, नहीं तो परफेक्ट कॉल होता। नॉट अप्रूव्ड रिक्वेस्ट, रीजन पूछा, आपको स्टेप लैडर बोला। ड्यू स्टेप लैडर नॉट अटैच्ड और स्टिल अटैच्ड, रिक्वेस्ट ग्राउंड असिस्टेंस टू डिटैच स्टेप लैडर। ये नहीं बोलना है, बट गुड गुड अटेम्प्ट यहाँ पे बोलना है। विल गेट क्लियर ऑफ स्टेप लैडर एंड कॉल अगेन, ये बोल देना। आप Okay. एटीसी का काम नहीं है आपको ग्राउंड सपोर्ट देना अननेसेसरी, आपके कंपनी का काम है, यहाँ डिस्पैच को कॉल जाएगा। Okay. Okay. Yeah, I'll फ्लाइट keep it. डिस्पैच को भूलो मत, या उसके भी एक दो कॉल्स आ सकते हैं। विल गेट क्लियर, सो आपको डिनाई हो गया है, आपको रिक्वेस्ट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आपको डिनाई नहीं होता तो आप कैंसिल स्टार्टअप बोलते हैं। आपको डिनाई हो गया है मतलब रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड, इट्स बीन डिनाइड, यू विल मेक अ फ्रेश रिक्वेस्ट। उसके पहले विल गेट क्लियर ऑफ द स्टेप लैडर, फिर क्विकली आप डिस्पैच को कॉल करोगे। Mhm. एयर इंडिया डिस्पैच, एयर इंडिया 4159er, स्टैंड 2, step ladder is still attached, kindly get clear of step ladder ASAP, like on priority। उनके साथ तो इनफॉर्मल बातें होती रहती है डिस्पैच के साथ। तो वो आएंगे, क्यों नहीं है, एक ड्राइवर ही मिसिंग होगा। एंड ये किसने क्लियरेंस दिया, नीचे से किसी ने तो क्लियरेंस दिया आपको इंजन स्टार्टअप करने का, इसलिए आप कर रहे हो, तो somebody इज अलूफ हियर। इतना रियल लाइफ में होता नहीं है, बट वंस इन अ वाइल हो जाता है। Mhm. समझ रहे, nobody is that blind we think, but errors happen when we think we are not blind but we are blind, that's what really happens। Mhm. सो अभी कैसे आपको क्लियरेंस देंगे, क्योंकि वहां पे तो एफओडी हो जाएगा और कोई इंसान होगा, ही और शी विल बी लाइक इंजेस्टेड इनटू द इंजन एंड सो ऑन। Okay. ओके। Yeah. हम्म। तो स्टार्टअप कॉल वाज गुड। ठीक है, अच्छा कॉल था ये काफी, बस 9-9 नहीं बोला आपने, नहीं तो 10-on-10 आ जाता आपको। और ये पैन पैन में W1 मिस कर दिया, बाकी बहुत अच्छा था कॉल। 7/10, इट्स गुड। एनी क्वेश्चंस, हैव यू अंडरस्टूड, हाउ डू यू फील? टोटल करो एक बार। So could you scroll down? या चलो मैं करता हूँ, एक सेकंड। Okay. दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। इतना मिस्टेक्स होके भी, और पैन पैन मिस करके, कैंसिल पैन पैन मिस करके, डीएच ना पता होके, 9-9er बोल के, इट्स गुड, यू हैव गुड क्वालिटी। अवॉइड मिस्टेक्स एंड यू कैन सी इजीली 78-80 आ रहे हैं आपको। सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दो, 9 वाली एंड Mhm. W2 वाली, तो आपको 4 मार्क ऐसे ही मिल रहे हैं, सीधा 71-72 पे आ रहे हो आप। एंड रही बात और तो क्या ही दिक्कत थी, कुछ ज़्यादा थी नहीं। ये तो सारे कॉमन एरर्स हैं, ये तो हो सकते हैं। इसके अलावा बस वो ब्रेक शॉट पैन पैन बोलते तो शायद 10 मिल जाते।
75 76 आपके इजीली हैं इसमें, वो सिली मिस्टेक अवॉइड करके। बाकी मिस्टेक्स तो चलो ठीक है, कभी कभार होती है, दैट यू हैव टू वर्क ऑन टू रिमूव। इट कुड हैव बीन वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रावो में स्टक हो जाते, बट वहां पे एक्चुअली आपने 8 मार्क्स स्कोर किए हैं, सो कूडोज टू यू, वेरी गुड जॉब। कुछ नहीं आता था फिर भी आपने, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई थॉट, कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है फिर भी यू सॉल्व इट, एंड यू डिड इट एंड इट वर्कड इन योर फेवर। सी हाउ डिफिकल्ट वाज दैट। है ना, सही Yes. सोच रहे हो आप, गुड जॉब। आई वुड हैव Thank सेड नहीं आता, डीएच गलत कर रहे हो, बट मैं बोलूंगा होता है, कुछ ना कुछ मिस होता है। इससे आप you. क्या सीखे? आईएलएस अच्छे से समझना सीखे हो, टाइम है आपके पास, एंड डीएच का पूरा टेबल कैट का याद कर लो। नींद में भी Mm. कोई उठाए तो यू शुड बी अ प्रो ऑन कौन सी कैटेगरी के क्या मिनिमम्स है, Mm-hmm. बाय हार्ट कर लो वो चीज़ को फुर्सत में। ठीक है, Right. Okay. Yes. चलो, एनी क्वेश्चंस? No, sir. Negative. डोंट गेट लेट बैक एंड इम्प्रूव फ्रॉम हियर, ओके, डू व्हाट यू आर डूइंग, Yeah. कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, सिंपल। आज नहीं पास हुए हैं, टाइम है उसको। Mm-hmm. ओके, Yes, sir. just stand by and we'll quickly do your part 2. All right. Roger. Yeah. Okay, so imagine, okay, me, okay, wait, rest everybody can go. है ना? Okay, Meet is like, wow, just me. Okay. Okay, so let's imagine you have entered. Okay, let's start. Okay, Meet, why are you doing RT? Sir, RTR, I'm studying RT to get an insight of, uh, look into a pilot's life, and also to know how to operate a radio equipment before I start my flying and sort of get into the aircraft for the first time. It's good to know how to operate the radio equipment and have a basic idea about the aircraft. Also, it is considered one of the challenging subjects out of the exams that have to be given to get a CPL license. So that is why I'm doing RT. What's the full form for RT? So full form for RTRA is Radio Telephony Restricted Aeronautical. Okay, what do you mean by WPC? So WPC stands for Wireless Planning and Coordination Wing. Uh, Basically, they take care of the spectrum management in our country, and also issuance of license, and they're also responsible for conducting our RTR exam. Which annexure of ICAO has radio telephony? Sir, ICAO Annexure 10 has information about radio telephony. It's called Can you, um, it's called Aeronautical okay, how Information. about NX15? Sir, NX15 Hmm. Part 3, which talks about communication systems. No, what is NX15? Um, Annexure 15 talks about communication procedures. Wrong, that's wrong. What do you mean by RADRA and MWARA? Sir, RADRA stands for Regional Air Correction. Stands for Regional and Domestic Air Routing Area. They basically operate on the upper side band, and there are five such um, regions in India.
northern region, southern region. How about MWARA? MWRA stands for Major World Air Routing Areas. They're basically uh, used on HF. They provide services for aircrafts that are unable to reach VHF. And there are 31 Okay, overlapping what are networks the two around the types world. of communication systems? So the two types of communication systems are HF and VHF communication systems and voice and data communication systems. Okay, very good. What is the definition of distress? So distress is a situation where an situation or a condition where and which can be affecting an aircraft's safety or a You have to passenger's give safety. verbatim definition. How do you define altitude? So altitude is the vertical distance from from mean sea level up to a certain height. It is given in flight level. Okay, fine. Thank you. You can go to the next examiner. Thank you very much, sir. Okay, Meet, describe what is a radio wave. So a radio wave is an electromagnetic wave which travels, which is of two types, HF, VH, correction, not of two types, which is of multiple types such as HF, VHF, UHF, low frequency, Hmm. and it's used for communications. It's used for transfer of data as well as voice What are the communication. physical properties of radio wave? How do you describe radio waves? So radio waves travel in on a speed of 3 into 10 to the power 8 meters per second, which is the speed of light. Mm-hmm. And they have two components, electric component and a magnetic component. And they are used for data and voice communications as well. What's the waveform of radio waves? So they're sinusoidal in nature. What is the relationship between frequency and wavelength? So the relation between frequency and wavelength is basically they're inversely proportional to each other. And the formula for frequency can be given by F equals to C by lambda, where lambda is Okay, wavelength. what do you mean by amplitude? Um, Amplitude is the basically the time it takes for a wave to travel and come back to its um, That's wrong. How do What is VHF and how do they propagate and what are its uses? so VHF stands for very high frequency. They are they propagate via line of sight, which is basically uh, direct, like they propagate in a straight line. They are used for majorly used for voice communications in aviation. Uh, Only and voice? they're majorly used for voice communications in aviation as well as data communication. That's it? No navigation? Uh, What about VOR? yeah, I was coming to that. No, you're too late. What is the bandwidth of VHF? So it goes from 30 megahertz to 300 megahertz. Name radio navigation systems used on aircraft. So ADF and ADF, it stands for automatic direction finding. It basically gives directions towards NDBs, which are non-direction beacons. Mhm. No, non-direction beacons basically they give out their grounds. They're Only placed on one system is used. um,
For radio navigation, only NDBs or ADF, that's it. Just a second, sir. I'll. What is modulation? Um, so modulation is when uh, ca- modulating signal or a audio signal is superimposed on a high frequency carrier wave. There are basically three types of modulation in VHF: keyed modulation, frequency modulation, and amplitude modulation. Okay, fine. Thank you. You can go. Thank you very much, sir. Okay. मीत रेडियो वेव्स ईएम वेव्स में बहुत स्ट्रगल किया आपने फालतू में, एनएक्सएस में बहुत स्ट्रगल किया है, वाई आर टी में यू हैव टू मेंशन रूल 63. ओके. Mhm. एंड रडारा MWARM में फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो, इन्होंने जानबूझ के आपको गलत एब्रिवेशन दिया है. और डिस्ट्रेस का डेफिनेशन इज नॉट एज पर द बुक. ऑल्टीट्यूड का सो एंड सो है, दे माइट नॉट टेक इट. अच्छे से देखो इनके डेफिनेशंस एंड आज इनको अच्छे से याद कर लो. EM waves don't struggle. EM waves की 5 लाइनें एक साथ बोलना है. Radio waves are electromagnetic waves. They are sinusoidal in nature. They have two components, electric and magnetic, both perpendicular to each other in direction of propagation. Based upon orientation of electric, we say polarization. Mhm. There are key elements, frequency, wavelength, inversely proportional to each other. Frequency is number of cycles per second. Wavelength is length of one cycle. Mhm. Amplitude is peak to peak. And a sine wave reaching its max and coming to its negative max or low, the distance between that peak to peak is amplitude. Mhm. पीरियड है वो टाइम का दूसरा, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड. पीरियड इज टाइम टेकन फॉर वन साइकिल, वो पीरियड होता है. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड. इतनी तो चीजें हैं सिर्फ. VHF के बारे में पूछा है तो खुद से बैंडविड्थ बोलो ना. सबसे पहले तो 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए. प्रोपोगेट सही बोला आपने, बट सिर्फ वॉइस के लिए नहीं है, नैव के लिए भी यूज होता है. RN सिस्टम्स कितने सारे हैं? ADF, VDF, ILS, DME, ट्रांसपॉन्डर्स. इतने तो पढ़े हैं ना हमने. Mhm. क्या हो गया, बता ही नहीं रहे हो? ब्लैकआउट हो गया. रैपिड फायर इमेजिन नहीं किया था ना आपने. Right. Yeah. डोंट गो विथ सच एक्सपेक्टेशंस. मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है. तो आप 50-50 पे रहना चाहते हो या 70-80 करना चाहते हो, ये तो सेम क्वेश्चन है, इनके साथ आप गलत नहीं हो सकते हो. समझ गए? Mhm. Yes. Yes. चलो इन पे काम करोगे. और मैं ये आपको दोबारा पूछूंगा. आई नीड परफेक्शन ऑन दीज क्वेश्चंस. नॉट अ Mhm. बिग प्रॉब्लम. यू आर ऑलमोस्ट देयर. कोई बड़ी बात नहीं है. एक बार और अच्छे से रिवाइज करो सारे और देखो कहाँ मिस्टेक हुई है. Okay. NX15 is a nautical information service. Click a picture. NX10 aeronautical telecommunications. Click a picture in your mind. Come on, ये दो. और पर्सनल लाइसेंसिंग, ये तीन. तो आप Mhm. कभी भी आप भूल नहीं सकते हो. कितने टाइम से पढ़ रहे हैं हम लोग. Mhm. है Yeah. ना पार्ट 2 वाइवा बुकलेट में लिस्ट. Mhm. Yes. हम्म. Yes. Yes. So. MWARADR सब बेसिक क्वेश्चन से ये आपके एक्यूरेट होने चाहिए. जो नहीं पढ़े हैं उनका ऐसा आंसर दोगे चल जाएगा. Mhm. Okay. ठीक है. Yes, sir. हम्म. करो ये पार्ट. एंड पार्ट 2 में कुछ दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ. Sir, read you two. Could you say it again? आई एम सेइंग पार्ट 1 वाज एक्सीलेंट. पार्ट 2 में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ. Uh, no, sir. I just wasn't prepared for the rapid fire. I'll make sure I'll just go through my notes once again and also रैपिड the. फायर हो ना हो, आपने आंसर सही नहीं दिया है, ये क्या बात हो गई? हम्म? Mhm. ऐसे होता है, जरूरी नहीं आधा घंटा में लेके बैठेंगे आपको. 5-5 मिनट में भी करते वाइवा. कौन बोला आपको? Okay. Okay. कितने क्वेश्चंस पूछे आपको? फटाफट पूछे. जस्ट हैव टू बी एक्यूरेट. स्पीड के साथ जाओ ना. अरे सर आप Okay. कितना भी फास्ट पूछो, मैं तो पूरा हिस्ट्री बताऊंगा. अरे वो टेक्निक अच्छी है. वो पेस भी मैच करो. आपको एक्यूरेसी आप नहीं दे रहे हो, आपको एक्यूरेसी चाहिए. डेफिनेशन एक एक लाइन के हैं. Okay. Yeah, I'll keep that in mind. I'll try improving myself. YRT बाकी सब ठीक है. एज पर रूल 63
Commercial aircrafts in India can fly only as per IFR or VFR, and there should be at least one communication equipment on VHF capable of two-way communications on board the aircraft. And to operate that, we need an RTR-A license. So it's connected to DGCA rules of the air, Indian Aircraft Rules 1937, and so on. And I decided to do this first because it will give me an exposure to a pilot's, that is my future job's daily life. So this is one subject which is a culmination of all subjects where I get an exposure to regulations, metrology, navigation, a little bit of technical also if I have to understand the aircraft, flaps and everything. Mm-hmm. So this seems like a good start, and I wanted to do it, and I'm doing it now. And this is what I've planned. Like that's it. बहुत जेनेरिक आंसर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बट कम ऑन, यू कैन डू मच बेटर देन दैट. Mm-hmm. Okay. लर्न टू रीड द रूम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली नाउ. ऐसा Mm-hmm. है ना. तो रीड का क्या, ये ऑब्वियस है सर, फटाफट पूछ रहे हैं, एक्यूरेसी चाहिए. NX-15 NX-10 बहुत गलत है. रेडियो वेव्स अच्छे से नहीं बोला है, बट आता था बट बोला नहीं आपने, एम्पलीट्यूड नहीं बोला. एंड ठीक है, मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन पर्पस क्लियर नहीं है, डिस्ट्रेस डेफिनेशन, ऑल्टीट्यूड डेफिनेशन क्लियर नहीं है, RADRA MWRA ठीक है. हर क्वेश्चन का आपने आंसर बड़ा बनाया है, गुड. अभी क्विक आंसर्स, की पॉइंट्स भी दिमाग में रखने हैं आपको. की पॉइंट्स, की पॉइंट्स है ना, कैनॉट बी स्टम्प्ड देयर. की Okay. पॉइंट्स, की वर्ड्स एंड एक्यूरेसी. NX-10 NX-15 में कंफ्यूजन नहीं चाहिए. Mm-hmm. Okay. WPC किसके पार्ट है वो भी बोल सकते थे आप. सब में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कोई बात नहीं. आई लाइक दैट. मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा, दैट्स अ गुड एटीट्यूड. बट जब आप जॉब कर रहे हो और जब आप स्टूडेंट हो तो यू कैन नॉट डू दैट. वी डोंट हैव दैट लग्जरी. ठीक है. Yes, sir. ओवरऑल गुड जॉब. पार्ट टू कैन बी मच बेटर. पार्ट वन इज रियली गुड. थर्सडे और फ्राइडे आई डिसाइड, यू बी रेडी. ओके. Sure, सरप्राइज sure. करूंगा मोस्टली थर्सडे को ही, और नहीं हुआ तो फ्राइडे करेंगे. बट आई थिंक Okay. थर्सडे करके फ्री हो जाएंगे. तो मेरे को Sure. चाहिए पार्ट टू पे मेहनत, क्वेश्चन नंबर 5 का कॉल अच्छे से, Mm-hmm. एंड ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके मुझे आप आंसर दोगे. Okay, sir. इफ़ यू वांट आप वाइवा के हिसाब से आंसर्स लिख के भेज सकते हो, या पर्सनली मुझे दे देना आप कल. कभी भी पढ़ के हो जाए तो बोलो सर हो गया, ये आंसर्स आप कभी भी पूछ लो. आई नीड दैट अपडेट फ्रॉम यू. यू हैव द Sure. लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पार्ट टू. No, sir. I would like it if you could share it with me. Sure, sure, no worries. Any questions? Anything else I can do? You Uh, want us to do? no, sir, but I'll let you know if I have any further doubts or if I need any help. I'll just Yeah, text you. I need daily updates, okay? Yes, sir. I'll give you the answers of the question. I आराम mean, से, yeah. फुर्सत से ब्रेक वेक लेके आराम से कर लो, डिनर के बाद कर लोगे चल जाएगा. बस बिफोर एंड ऑफ द डे आई नीड इट, ओके. Okay, sir. Yes. चलो, गुड जॉब, कीप इट अप. एंड या, ये होने के बाद विल बी गोइंग इनटू अ फास्टर पेस ऑफ योर लेक्चर्स एंड लर्निंग आफ्टर RT एग्जाम. ठीक है. Okay. So we generally use vacation period is like, anyway, you'll know when we get there. No worries. Yeah. Chalo. All the best. Work on things. Reflect on the feedback, and accordingly be proud and be self-supportive. Mm-hmm. And ensure पार्ट टू में क्या क्या है उन पे काम करो बस तुरंत. Okay. ओके, Yes. ज्यादा कुछ है नहीं, बस रिफाइन करना है आपको. Mm-hmm. Mm-hmm. चलें फिर. Yes, sir. चलो, थर्सडे विल बी डूइंग समवेयर बिफोर 3 PM, विल बी रैपिंग इट अप. उतना आपको बता दे रहा हूँ मैं, है ना. All good, sir. Yeah. चलो, ऑल द बेस्ट, गुड जॉब, कीप इट अप. Thank you, sir.